Ladies and gentlemen, esteemed speakers, and distinguished guests, good afternoon and assalamu alaikum. Welcome to this significant panel discussion. Today we gather here to talk about the important concerns about the nation's future, migration, and its impact on the youth. Before I begin, I would like to express my gratitude to each of our esteemed speakers for joining us today for the panel discussion. I will pose few questions and each of you have few minutes to respond to the questions. So my question from Ma'am Sara. As you serve as the chairperson of the Child Bureau and Welfare in Punjab, what steps is the government taking to address the challenges faced by migrants in Pakistan? कौन से steps government उठा रही है इन तमाम इक़दामात को focus करने के लिए? Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I would like to appreciate SSDO and 𝐒𝐻𝐴 and his entire team for hosting and organizing this seminar on a very, very important topic, which is very relevant because these cases are happening a lot in Pakistan, which involve human trafficking, child trafficking, illegal migrants going from Pakistan to other parts of the world. So it's very important to hold such seminars and address such issues, which they're not just bad for the person or the migrants, but also they defame our country. So it's important to address them. Secondly, it's an honor to be addressing an audience which makes up more than 60% of our population. So it's a big number that you all are representing here in this hall. Coming to my question that is posed by the moderator, which is about the steps that I am taking or my department is taking in Punjab to stop this, to eradicate this menace, involves rehabilitation, rescuing, and then empowering children who are involved in and used as trafficking victims. So what happens is that when children are smuggled, boys and girls, and then when they're trafficked, and then when the government finds out about them, they involve my agency. We together rescue such migrants, such children, and we bring them to our Child Protection Bureau. This is the only department in Pakistan which has a mandate to rescue children, educate them, and empower them. We bring such children to our department, and we don't just provide them food, shelter, and education, we also empower them to ensure a better future for them. So I'll narrate an incident. 2 years ago, there were two girls, young girls, who were forcefully put in and trafficked by their own parents, and they were sent for sexual exploitation. They were exploited, and they were sent to the UAE. So then the ambassador in the UAE and the government contacted the Pakistan government, and the Child Protection Bureau, my department, was involved. We got those girls from the government and the law enforcement agencies, and they stayed in the bureau, and we provided them education and we empowered them. This is just one example, but in all these cases, we're always there, we're always ready to rehabilitate, to educate such victims. So this is the part that my department is playing in this. Thank you. Thank you, Ms. Sara, for sharing the case studies and examples in overcoming this major concern. Moving ahead to my next question from Ms. Uzma Kardar, who is a politician and an educationist. Can you share insights on programs or initiatives focused on providing education and healthcare services to migrant populations? Bismillahirrahmanirrahim. Thank you so much. Assalamu alaikum to everyone. Come on, wa alaikum assalam. Thank you very much. First of all, I would like to, appreciate the commendable effort made by SSDO. We've been working together for the past 2 years, and I think this organization, and Mr. 𝐒𝐻𝐴 sitting there, are largely responsible for bringing all the stakeholders on board on one page and building this awareness right down to the district level. I think I've never been to Gujrat before. This is my first time, and it's a wonderful sight to see all these young people of Gujrat sitting here. You're the VIPs.
You are the future of Pakistan. And it's also heartening to see our friends from the British High Commission. The very fact that you are all here shows how concerned you are for the welfare of the young people and how you want them to reach your country in a legal manner so that they can explore all the opportunities which they actually deserve, rather than going the wrong way, going the irregular way, and facing so many hardships and difficulties in which they are not alone. Their families suffer equally. So I think, I don't need to stress more on that. The skits that were shown to us today, believe me, my heart is broken. मेरा दिल टूट गया वो skits देख के. इतना उसमें hardship, so much suffering, so much of pain for everybody. So I think we don't need to talk more about it. Now I'll come to the question that you just asked me. What is the government doing about it? Number one, I think we have the Bureau of Migration. Now this is an official institution, and all the young people must approach this bureau and get the right information before getting trapped by anybody, any agent, any consultant who is not registered, who is not official, and that might end up in a scam. So now you all are responsible. The government has institutions, they have organizations where you can go and ask. Secondly, I think the Pakistan government is, especially the Chief Minister of Punjab, Maryam Nawaz Sahiba, she is very focused on the youth, for providing them opportunities, for hand-holding of the youth. And all the time she's thinking about it. So much so that, well, not to say oldies, but there are oldies in our system. They say that the youth get a greater opportunity to meet the Chief Minister than we do, because her doors are open to the youth. And she has thought of many initiatives for you guys. Number one, the laptop scheme, it is going to be introduced again. The laptop is a key to earning dollars sitting here in your own country. Do not, अपने मुल्क को undermine ना करें. आप डॉलर्स, आप पाउंड्स, आप यूरोज यहाँ बैठे कमा सकते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ पे जो आए थे हमारे स्टूडेंट्स, उन्होंने आपको बताया है. देखिए, ई-कॉमर्स, हमारी जो गवर्नमेंट है स्टार्टअप्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रही है, उनके लिए लोन्स प्रोवाइड कर रही है. आईटी सिटीज़ का जो है प्रोग्राम है इंशाल्लाह. आईटी ये जो टेक सेंटर्स हैं, ये फ्यूचर है पाकिस्तान का. आपको ये कनेक्ट करते हैं पूरी दुनिया से. इट्स अ ग्लोबल वर्ल्ड. यू डोंट रियली नीड टू ट्रैवल अक्रॉस द अटलांटिक to make money for a good future. आप यहाँ बैठ के ये कर सकते हैं और बड़ी इज्जत के साथ कर सकते हैं. देखिए, एक बात आपने याद रखनी है, आपको इज्जत तभी मिलेगी जब आप अपने रूट्स की इज्जत करेंगे. आप पाकिस्तान को दिल से लगाएंगे, पाकिस्तान से मोहब्बत करेंगे, तो फिर बाकी दुनिया भी आपकी इज्जत करेगी. तो ये ना सोचेंगे कि आपके मुल्क में आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है या यहाँ पे आपकी लाइफ अच्छी नहीं गुजर रही है. इंशाल्लाह ताला हम इकट्ठे मिलके इसको बनाएंगे. इकट्ठे मिलके पाकिस्तान को हमने आके आप फ्यूचर लीडर्स हैं. यू आर द लीडर्स, फ्यूचर लीडर्स ऑफ पाकिस्तान. यहाँ से उठ के बहुत सारे लोग आप असेंबलियों में जाएंगे. तो अपने आप को कभी ये ना समझें कि हमें जो है कभी भी मौका नहीं मिलेगा. इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में आपको हर तरीके से, फिर स्मॉल लोन्स, ये गवर्नमेंट जो है आपके लिए स्मॉल बिजनेसेस के लिए लोन्स आपको मिलेंगे इंशाल्लाह ताला. और आप यहाँ बैठ के आप पढ़ें, अपनी यूनिवर्सिटी से क्लियर करें, उसके बाद जाके आप ये लोन्स के लिए अप्लाई करें. आपको इंशाल्लाह ताला आपको लोन्स मिलेंगे, जिससे आप अपनी छोटी छोटी बिजनेसेस स्टार्ट करें, जो कि बहुत बड़ी हो जाएंगी फिर. As far as universities are concerned, I think it is very important that this particular aspect of legal migration should be included in the curriculum. You see, because like the FIA Deputy Director just mentioned, that university students are soft targets. ये जो agents होते हैं, जो illegal और उनके जो facilitators होते हैं, इनकी नज़र होती है आपके ऊपर कि the moment you leave university, target them, entice them, lure them,
and then extract money out of them. So if the curriculum of a university has this particular aspect covered, then students will be aware. आप लोगों को पहले ही पता होगा कि नहीं, we have to guard against such scams. हम इसमें नहीं पड़ेंगे. We are not going to make ourselves suffer. We are not going to jeopardize our future and give trouble to our family. हम एक लीगल तरीके से आगे बढ़ेंगे, और लीगल तरीके से ही दुनिया में आगे बढ़ा जाता है, और लीगल तरीके से ही इज्जत कमाई जाती है दुनिया में. इलीगल तरीके से जो आपने ये देख लिया हशर लॉन्चेस में जो होता है, वही मुस्तकबिल हो सकता है, इसके अलावा कोई मुस्तकबिल नहीं हो सकता है. सो आई थिंक कि गवर्नमेंट आपके साथ, गवर्नमेंट इज we are in the government to serve you people, to give you a better quality of life, to improve your lifestyles and give you opportunities. इंशाल्लाह ताला आपको ये पंजाब हुकूमत जो इस वक्त आई है, इसका सारा फोकस आप लोगों के ऊपर होगा, आपकी ज़िंदगियों पे होगा, आपके फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए होगा. So have faith in your system and in your country, because you have to build the country. Thank you. थैंक यू सो मच मैम. बहुत खूबसूरती से आपने अपने ख्यालात का इजहार किया और नौजवानों को बताया कि ब्यूरो ऑफ माइग्रेशन से वो रब्ता कर सकते हैं अगर किसी तरह के भी चैलेंजेस वो फेस करते हैं. तो ये सबसे अच्छा उन्होंने बताया कि वो कहाँ पे और किस लीगल इंफॉर्मेशन किस चैनल से ले सकते हैं. माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्राम मिस नादिया जमील, who is a tremendous role in the media, women rights and advocate for child abuse. So what role does media play in informing the public about migration? Media का क्या किरदार है पब्लिक को एजुकेट करने में माइग्रेशन के हवाले से? थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात and the beautiful youth of Gujarat. My first time in Gujarat as well. और कितना खूबसूरत शहर है आपका, बहुत ज़्यादा खूबसूरत शहर है, डामाडोल सी हो गई आते हुए. What role can the media play? I will talk about the media because the media is not playing enough of a role, unfortunately. I'll talk about the kind of role it is playing, but primarily I want to tell people, especially the youth who might be influenced, कि एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ना 1960s में जब यूके में मंगला डैम के बाद मीरपुर ख़ास में ना कोई 250 विलेजेस तबाह हुए थे, तो 1960s में यूके ने उन 250 विलेजेस के लोगों को फिर सेंचुरी दी और कहा कि चलो हम यहाँ पे फ्लडिंग में सब लोग शहीद हो गए हैं, तो हम उनको बुला लेते हैं यहाँ पे यूके. उसके बाद 1960s में पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर उन्होंने टेक्सटाइल मिलें लगानी थी, NHS में नर्सेज कम थी, तो उन्होंने और लोगों को आने दिया. ये 2024 जो है ना पुत्रों, this is not the same as the 1960s and that time. Times have changed. जैसे कि वो जो बहुत ट्रेजिक वाक़या था ग्रीस जाते हुए किश्ती का, ये सिर्फ एक वाक़या है. Over 2 lakh people have tried to migrate from Pakistan according to FIA reports just in the last 5 years. It is imperative that all of you understand what Uzma ji was saying, कि अगर तो आपने बाहर जाने का सोचना है तो आप कानूनी जो रास्ते हैं उनको इख्तियार कीजिए ताकि आपका तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो. एक चीज़ है जो मैंने देखी है बहुत सारी हमारे यूथ में, अल्लाह संभालेगा, अल्लाह देख लेगा, अल्लाह के हवाले. लेकिन अल्लाह ने अक्ल दी है, अल्लाह ने अक्ल दी है, और अल्लाह ने वसीले दिए हैं, और अल्लाह ने दिमाग दिया है. तो हमें बहुत बहुत ज़रूरत है. हम सब सूरह रहमान सुनते हैं, तो फबे आइए लाइए रब्बे को माँ तो क़ुज़बान, तुम अपनी कौन कौन सी नेमतों को झुटला रहे हो. यहाँ सबसे बड़ी नेमत तो मेरे बच्चों आप खुद हो. आप खुद यकीन कीजिए, आपके अंदर एक फ़ौज है जो अल्लाह ताला ने बनाई है, जो आपको दिखाएगी कि हर मुश्किल के साथ आसानी है. और आसानी का लफ्ज़ बाद में इसलिए बताया गया है ताकि वो हमारे सबकॉन्शियस दिमाग में बैठ जाए. मेरी ये तवक्को भी है, कोशिश भी है, उम्मीद भी है कि हुकूमत और मीडिया साथ मिलके बच्चों के मेंटल हेल्थ के हवाले से और काम करें ताकि हम अपने बच्चों में पॉजिटिविटी और मोटिवेशन लाएं, ताकि उनकी जो ये लिमिटिंग बिलीफ्स हैं वो हम तब्दील कर सकें और उनको दिखा सकें कि अपने ही मुल्क में वो क्या कर सकते हैं. क्योंकि बहुत सारे जो नौजवान हैं वो थोड़े से डिसइल्यूजन्ड हैं. क्यों हैं डिसइल्यूजन्ड?
उसका हल क्या है, और जिन लोगों के पास हल है उनको प्लीज़ मौका दिया जाए। अनफॉर्चुनेटली मीडिया इज़ नॉट डूइंग एनफ, ना इस पर ड्रामे बन रहे हैं, ना इस पर बातचीत हो रही है। और जो टिकटॉक, जो कि हर गांव और हर शहर में और हर बच्चे के पास, यहाँ पे कितने कितने बच्चों के पास टिकटॉक है, यकीनन टिकटॉक, जो बाकी सारे गप्पी मास्टर टिकटॉक पे, जो मेरे ख्याल में जनरल मूसा है क्या है, जो एक बहुत बड़े मैंने देखा है उनके कुछ टिकटॉक, सभी बैठ के मैं रिसर्च कर रही थी तो मैं देख रही थी। देर आर सो मैनी पीपल यूजिंग सोशल मीडिया and forums like TikTok to traffic children and influence children, ताकि illegal migration, देखो उनको तो 30 लाख रुपए मिल गए और आपने अपनी जान की बाजी लगा ली, वही 30 लाख रुपए, और कई बच्चों ने 5 लाख की, 10 लाख की, 15 लाख की बाजी लगाई। वही पैसे, जिस तरह उज़मा जी कह रही हैं, यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करें, यहाँ पे अगर आप वसीले ढूंढें, नीयत होती है ना, तो वो खुद ही रास्ते आपके लिए बनाता है। आप नीयत ये बांधें कि मैंने जो भी करना है कानूनी और सही रास्ते से करना है, आप बस ये नीयत बांधें और देखिएगा इंशाल्लाह ताला रास्ते ही रास्ते खुलेंगे आपके साथ। जैसे कि उज़मा जी ने कहा हुकूमत आपके साथ है, जैसे कि सारा जी ने कहा पंजाब प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है वो बच्चों के साथ है। और मैं एक छोटी सी नाचीज़ एक्टर हूँ, मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर हूँ, बच्चों की एक्टिविस्ट हूँ। जब भी कोई यूथ कहीं से भी मुझे आके कहेगा कि नादिया जी मुझे एडवाइस चाहिए, मैं कहाँ जाऊँ, तो you can email me on nadoojamil@gmail.com. I will guide you to the place where you can get the correct advice. I will facilitate you. Everybody is here for you because वाकई में you are the हाल of Pakistan and the मुस्तकबिल of Pakistan. Everything is you. You are the miracle that that is happening right now. तो मेरी यही एक तवक्को है आप लोगों से। आखिरी चीज़ बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजी में एक ड्रामा ट्रायंगल होता है। ड्रामा ट्रायंगल में एक V फॉर विक्टिम होता है, एक P फॉर प्रॉब्लम होता है और एक R फॉर रेस्क्यूअर होता है। जो विक्टिम मेंटालिटी होती है ना, जो एक लाचारी की मेंटालिटी होती है, उसमें प्रॉब्लम आपके बाहर है हमेशा, मुआशरा, हालात, पैसे नहीं हैं, घर में बड़ा बुरा हालात हैं, तशद्दुद किया जा रहा है, हमेशा कुछ बाहर से आएगा, ट्रिगर हमेशा बाहर से आएगा। और विक्टिम के लिए, लाचार के लिए रेस्क्यूअर भी हमेशा कहीं बाहर से आएगा कि वो बचाएगा, वो बचाएगा, यूके जाऊंगा मेरी पूरी फैमिली बच जाएगी। जब आप सर्वाइवर बनते हैं और फिर सर्वाइवर से आगे थ्राइवर बनते हैं, और यकीन करें मुझे ये बात कैंसर की बात समझ आई, जब आप थ्राइवर बनते हैं आपको समझ में आता है कि प्रॉब्लम बेशक बाहर हो लेकिन रेस्क्यूअर जो है ना वो आपके अंदर है, वो आपके अंदर है। और सबसे बड़ा रेस्क्यूअर है इल्म, रिसोर्स नंबर 1 इल्म। दैट इज़ वाई द फर्स्ट वर्ड इन आवर होली बुक इज इकरा। तो उसको नज़रअंदाज ना करें, वो बहुत बड़ी नेमत है। और कभी लाचारी और विक्टिम मेंटालिटी में अपने आप को ना लॉक होने दें। Aim to be a survivor and then aim to be beyond survivor, a thriver. That is your aim, that is your goal, inshallah ta'ala. Thank you so much, ma'am. आपने बहुत खूबसूरती से अपने ख्यालात का इजहार किया। My last question is from Miss Ansa Noreen, जो कि trafficking in person expert हैं। How can technology be utilized to combat human trafficking and assist migrant youth in vulnerable situations? टेक्नोलॉजी को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग को ओवरकम करने के लिए और यूथ को एजुकेट करने के लिए? Thank you very much. Assalamu alaikum, everyone. Gujrat especially, because I am from Gujrat. I'm coming back to Gujrat after 8 years. Thank you. So, I would like to address the technology's role in awareness and prevention of human trafficking. But before I go there, I would like to share a little bit of my journey. I'm an entrepreneur, a mother, and a survivor of human trafficking and gender-based abuse, multiple times actually. मैं लखनऊ से belong करती हूँ, small town, और
जो मेरा first entrepreneurial project था, that was at the age of 19. मैंने भी ICS किया था, and I realized कि लखनवाल में लड़कियों के स्कूल में कंप्यूटर लैब नहीं है, क्योंकि मैंने recently कंप्यूटर पढ़ा था, तो I thought कि this is the future, and the girls from my town, they deserve to get familiar with the technology of the future. और मैंने computer lab introduce करवाया as a subject for the class of 9th and 10th. So that was my first ever entrepreneurial endeavor. And the journey goes on. Then I started my fashion brand in 2010 when I moved to Lahore. 2020, in New York, I started my nonprofit organization for women survivors of human trafficking. Just recently, I launched my skincare line, a halal food catering company. ये सब बताने का मकसद ये है कि I didn't have any support from the outside. मेरी family में nobody was an entrepreneur. I had to learn all of that, and why I was able to successfully do that, because I believed in myself. I believed in my own potential. I was able to find ways to do things that I was really passionate about. And I always thought that my God-given potential is greater than any obstacles that may come my way. इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी जर्नी जो थी बड़ी स्मूथ थी. I encountered incidents जहाँ पे I have 2 failed marriages. And I'm not ashamed of it. Those were my experiences. I learned from them, and now I'm able to share that knowledge with others. That is another thing in our society, where we feel shame and stigma and take the blame for all that incidents or unfortunate incidents that happen to us. हम समझते हैं कि उसमें मेरा कसूर था, और हम उसको छुपाते हैं. Or that is another reason related to what we are talking about today, कि जो लोग बाहर जाते हैं, वहाँ पे वो क्या काम करते हैं, किन हार्डशिप से गुजरते हैं. एक कमरे में 36 लोग रह रहे होते हैं जो कि टर्न्स लेते हैं, कि एक वक्त में सुबह के टाइम पे लेट्स से 18 लोग आके उस कमरे में रह रहे हैं, फिर दूसरे लोगों की शिफ्ट स्टार्ट होती है और वो बाकी के 18 आके उस कमरे में सोते हैं. लेकिन पाकिस्तान में वो जो पिक्चर पेंट करते हैं दूसरे यूथ के लिए या पब्लिक के लिए, इट्स अ वेरी डिफरेंट पिक्चर. वो जो शुरू में उन्होंने स्किट किया था ना, कि वो जो भंड था वो आके बता रहा था जी कि नाउ आई एम दिस एंड दैट एंड डोंट टॉक टू मी लाइक दैट, क्योंकि अब मैं डॉलर कमाता हूँ या यूरो कमाता हूँ. दैट इज़ हाउ वी प्रेजेंट आवरसेल्फ. हम बड़ा शाइनी एक रियलिटी को पोर्ट्रे करके दूसरों को गुमराह करते हैं. So I make it my mission कि मैंने ऐसा नहीं करना. जो मेरे साथ हुआ, that was not my fault. And I'm not going to make it my shame, my blame, and my stigma. I was just part of another conference for which I especially traveled from the US. It's called Trafficking in Person. वहाँ पे after the conference and panel discussion, the women especially reached out to me and they said, we were very inspired by your story, and they can relate with my story. Because it's not just one-off incident with one person. It is happening all around us. But what we do is we hide that. We try to push it under the rug. So we need to stop doing that. Own your power, your greatness, your God-given potential, and try to use it to propel yourself further. आप बहुत कुछ कर सकते हैं. Like, look at my example. 22 years ago, I started that computer lab in Lakhanwal. Can you imagine उस वक्त computer पाकिस्तान में बिल्कुल नया आया था. उसके बाद मेरी शादी हो गई. 2.5 साल शादी रही. एक बच्चा हो गया शादी में से. नहीं चली, मैं वापस लखनवाल आ गई. मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि मैं अपने 3 माह के बेटे को दूध पिला सकूं.
उसके लिए दूध खरीदने के पैसे नहीं थे। 2 दिन तक मुसलसल मैं उसको फीडर में पानी डाल के पिलाती रही, चीनी मिला के। After 2 days, that boy just gave up. उसने कहा मैं मज़ीद पानी पे ज़िंदा नहीं रह सकता। I stood up. Instead of looking around, external force को देखने के बजाय, इधर-उधर देखने के बजाय, मैंने कहा कि मैं खुद स्टैंड लूँगी, मैं अपने बेटे के लिए खुद एक लाइफ क्रिएट करूँगी, उसकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करूँगी। We will never be here again. That's when I moved to Lahore, found 3 jobs. मैं सुबह में ट्यूशन लेती थी, 9 to 5 प्रॉपर्टी के ऑफिस में काम करती थी, शाम में एक और ट्यूशन लेती थी। This is the potential that as women we do have. And as youth, I mean, जो लड़के हैं हमारे माशाल्लाह वो क्या कुछ नहीं कर सकते। Just believe in yourself, use your potential right here. And if you get the opportunity to go out, of course you should, but use the legal means. Educate yourself, use technology. अभी हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास हर तरह के resources available है. Reach out to people, reach out, ask questions, and Google. आप लोग पढ़े लिखे हैं, and then propel that change in the society. दूसरों के साथ share करें. अगर आपके साथ कुछ unfortunate होता है तो उसको छुपाने की कोशिश मत करें, please. क्योंकि इस तरह से क्या होता है कि वो एक snowball effect बन जाता है कि कोई बात ही नहीं कर रहा कि कुछ गलत भी होता है हमारे साथ, सब shiny है, सब pretty है, तो बाकी लोग फिर उसमें they feel stigmatized. अगर वो अपने कुछ unfortunate incidents के बारे में बात करेंगे तो लोग उनको they look down upon them. कि अच्छा इसके साथ बुरा हुआ है, everybody else, everything else is good and great. No, it's not. So I was my own rescue in every difficult situation. So can you. If I can do it, coming from the small town, with nobody to help, nobody to support, thank you. I appreciate that, really, truly. You can do it too. And if you want to reach out to me to talk about it, you have any questions, again, my name is Ansa Noreen, ANSANOREEN.com. That is where you can reach me. Thank you very much for listening. Thank you so much, ma'am, for sharing your experiences and information with the youth.